Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum girls. I hope you all are fine. Girls, हमारे जो टॉपिक था एंजाइम ये दरमियान में रह गया था और ये थोड़ा हमने फास्ट किया था, तो इसमें हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मिस हो गई हों, तो आई थॉट के वी शुड रिज्यूम फ्रॉम दिस टॉपिक. मैंने आप लोगों को बताया था कि एंजाइम्स का जो टॉपिक है इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर मिड टर्म्स बट इट विल बी इंक्लूडेड इन योर final terms. So let's start the enzyme topic. Before this, I request you all to please take out your notes and your pens. जहाँ जहाँ आप लोगों को कोई डिफिकल्टी लगती है वो आप लोग साथ साथ नोट करें. एंड इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि अगर आप लोग अपने नोट्स भी इस पर बनाना चाहें, जो बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, समझा रही हूँ, मोस्टली बातें ऐसी हैं जो कि मैंने वहाँ बहुत शॉर्ट लिखी हैं और वो मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. So it's better if you take out your notes and start to note down. So enzymes. What are enzymes? You know that the enzyme means hidden friend. They are organic compounds and they are proteinous in nature. The proteins, as you know, they are hundreds and thousands of amino acids linked together. In the case of enzymes, it is hundreds of amino acids linked together. They are mostly in the globular structure. I've told you कि there are different structures, tertiary, primary, secondary, quaternary. ठीक है, तो इसमें quaternary structure जो है that is globular structure. Some of the enzymes are also tertiary structure. So they are biologically active. What they do is they increase the efficiency and they speed up the biochemical reactions. अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे without enzymes किसी भी सेल को या किसी भी ऑर्गन को कोई प्रोसेस करने के लिए, कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस करने के लिए कितनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है. एंड व्हेन योर बॉडी यूज एंजाइम्स तो वो एनर्जी जो है उसकी अमाउंट वो कैसे कम हो जाती है. दैट मीन्स कि ये आपकी बॉडी को एनर्जी एफिशिएंट बनाता है और आपकी बॉडी को अलाउ करता है कि वो कम से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके. इस तरह से आपकी ज़्यादा एनर्जी लॉस्ट भी नहीं होती और आप थोड़ी एनर्जी में ज़्यादा काम कर सकती है आपकी बॉडी. सो they highly increase the efficiency of biochemical reactions. Even small amount of them is enough to speed up the reaction. So they are sensitive to minor changes, even minor changes in the environmental conditions. मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि what are different environmental conditions and other factors which affect the properties and which affect the speed of reactions which it carries. So it does not affect the nature and properties of the end product. Basically दो टाइप के इसमें चीज़ें होती हैं. एक तो ये कि चलिए मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कि सबस्ट्रेट के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो कौन से दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं. सो दे आर फाउंड either they are dissolved in the cytoplasm or they are attached to the organelles where they are needed. They are sometimes produced by the cell or they are produced out of the cell. And they lowers reactivation energy जैसे मैंने बताया. And the last point is they need aqueous solutions for their activity. इसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में समझाया था कि why they need aqueous solution. It is water and ions and metals. So its structure is also metals and ions. It is present in their structure. So इसमें जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि जब डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में तो उसकी वजह से बॉडी की जो एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है. उसका रीज़न क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत से एंजाइम्स हैं और बहुत से केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं विच नीड्स वाटर. तो उसमें क्या होता है, जब वाटर अमाउंट जो है वो कम हो जाती है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में कैटालिसिस का जो प्रोसेस है जो कि एंजाइम कैरी आउट करता है वो स्लो डाउन हो जाता है. So basically their function is the biological catalysis. As you can see, biological catalysis means they in the biological system, ठीक है, we have a biological system, we are biological organisms. In our systems they catalyze the chemical reactions and biochemical reactions. They speed up them without using their cells. They remain unused. Okay, and they do not change the reaction. The reaction will proceed as it is. They will just speed it up. How? We will discuss it later.
So they are present in the cytoplasm, and there are hundreds and different kinds of enzymes, but each enzyme is specific for one kind of reaction. Their specificity is very narrow. मैंने आप लोगों को बताया था, एक मैंने एग्जांपल आप लोगों को दी थी पेप्सिन की. पेप्सिन जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इट इज़ एन पेप्सिन जो लिक्विड है वो जिस एंजाइम से रिलीज होता है वो बेसिकली पेप्सिनोजेन जो है ये स्टमक ही में पाया जाता है और वो स्टमक ही के रिएक्शंस को जो है वो एक्टिव कर देता है. नॉर्मली ये इनएक्टिव रहेगा, लेकिन जिस टाइम पर इसकी डाइजेशन के लिए कोई ना कोई मटेरियल आता है तो देन इट विल बिकम एक्टिव. इसी तरह से मैंने आप लोगों को फाइब्रिनोजन की एग्जांपल दी थी कि इट इज फाउंड इन द ब्लड विच इज नॉर्मली इनएक्टिव, लेकिन जैसे ही कोई कट लगता है, कोई एब्रेशन होती है, सो एट दैट टाइम इट बिकम्स एक्टिव ड्यूरिंग द ब्लीडिंग. सो फाइब्रिनोजन इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द फाइब्रिन, आई गेस इट इज फाइब्रोनेज. So after that, it is written that the fructose and glucose may join to form sucrose, and they will take a lot of energy and a lot of time, but with the enzyme it becomes easier and faster. So the nomenclature. So basically all the enzymes are named as by adding a suffix ase, as you can see here. The substrate is lactose. Okay, if the enzyme has a substrate that is lactose, which is the sugar present in the milk. Okay, so that sugar will be digested or by the enzyme that is lactase. Same is with the maltose found in the fruits. The enzyme will be maltase, cellulose, cellulase, lipid, lipase, starch, amylase, protein, protease. So for the starch which is present in the, do you remember? I told you where it is found. Okay, it is found in mostly in the cereals. And the lipids, they are found in almost every organelle. Okay, in every cell. They are found in the structure of the cellular membranes, and the cellulose is found in the plants. So they are so as you can see here, it is written maltose plus water. The maltase enzyme will act and it will split it into glucose to glucose and glucose. Okay, so there are some characteristics. Enzymes can act only one type of, each enzyme can act only on one type of substrate, but it doesn't mean कि वो सिर्फ एक ही substrate के साथ करेगा, with one type of substrate. Okay, so this is a substrate. Suppose जैसे भी last इसमें लिखा होता है maltose की example दी थी, it's a maltose. ठीक है, so उसके जो binding site है उसकी शेप जो है वो एग्जैक्टली उसी तरह की बनी हुई होगी. नाउ यू कैन सी इसकी जो शेप है ये इस तरह से है. इसमें डबल आप कह सकते हैं कि एक की जो है उसकी वो डबल है यहाँ पर. लेकिन आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे वाला जो है वो उसमें तकरीबन ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 2 और 3 डिप्रेशंस हैं यहाँ पर. तो ये इसके लिए फिट नहीं है और ये इसके लिए फिट नहीं है. सो बेसिकली ये इधर फिट आ जाएगा और ये इधर फिट आ जाएगा. सो सपोज इट्स अ सुक्रोज एंड इट्स अ माल्टोज. सो इट इज़ फॉर दिस एंजाइम माल्टेज एंड इट इज़ फॉर दिस एंजाइम सुक्रेज. So enzymes speed up the reaction by lowering the activation energy. मैं आगे समझाती हूँ आप लोगों को कि how it lowers the activation energy. So what is activation energy? Activation energy इसको बोलते हैं कि किसी भी केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस को एक्टिवेट होने के लिए और उसको कैरी आउट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज़ नीडेड इन द फॉर्म ऑफ सपोज ATPs. ठीक है, ATPs जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, डू यू रिमेंबर, इट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब वो ATPs डेवलप होते हैं तो ATPs जो हैं यहाँ पर चाहिए होंगे. सो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो
इधर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए. बट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दिस एक्टिवेशन एनर्जी जो कि एक्टिविटी को करने के लिए और साथ साथ उस एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए जो है वो जो चाहिए उस एनर्जी को उस टाइम को एंजाइम जो है वो सेव कर लेता है. सो their presence does not affect the nature and properties of the end product, as I have told you, and they are highly specific. They can catalyze only one kind of substrate. Small amount of enzymes can accelerate chemical reactions. They are really sensitive to pH, temperature, and other conditions. And there is one more term that is known as turnover number, which is defined as the number of substrate molecules transformed per minute by one enzyme molecule. So each enzyme molecule has its own capacity to transform one substrate molecule in a specific time. Suppose अगर maltase है, ठीक है, maltase को अगर सॉरी माल्टोज है, माल्टोज को आपने ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, बट उसके लिए जो है आपने इस ब्रेकडाउन के लिए आपको एनर्जी चाहिए. अगर उस टाइम पर एंजाइम वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो जब ये मैनुअली जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो सपोज इस प्रोसेस को होने में 1 आवर लगता है, लेकिन जब आप एंजाइम को उधर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो सपोज उससे 1 मिनट लगता है. तो 1 आवर एंड 1 मिनट, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ठीक है, ये एक अलग बात है. इधर जो टर्नओवर नंबर की जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो एक एंजाइम है माल्टेज, ये कितने माल्टोज को कितने टाइम में जो है सपोज 1 सेकेंड में ये कितने माल्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में. सो दिस इज कॉल्ड एज टर्नओवर नंबर. एवरी एंजाइम हैज इट्स ओन टर्नओवर नंबर. इसकी एक बहुत अच्छा टेबल था इसका जिसमें उसमें लिखा हुआ था सबके टर्नओवर नंबर्स, बट मैं आप लोगों से शेयर इसलिए नहीं करी क्योंकि इट विल बिकम अ बिट टेक्निकल फॉर यू पीपल. So then is the enzyme synthesis. So here is available some of the sites where they are formed. So enzymes are synthesized by ribosomes which are attached to the rough endoplasmic reticulum. Information of the synthesis of enzyme is carried by DNA. As I have told you that nucleus is basically the brain of the cell. So whatever the cell wants to be synthesized, वो उसका order कौन देता है? The DNA present in the nucleolus. So the information or the message or the order for the synthesis of enzyme is given by DNA. Amino acids are bounded together to form specific enzyme according to the DNA codes. अच्छा, अब ये जो specific enzyme की बात कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो प्रोटीन्स होते हैं इट हैज़ many टाइप्स. ठीक है, thousands of टाइप्स, बट उसमें से कुछ एंजाइम कुछ टाइप्स जो हैं दैट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. ठीक है, सो उसमें जो है अब हर प्रोटीन पर एक्ट करने के लिए उसका अलग टाइप का, या हर कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करने के लिए उसका अलग टाइप का एंजाइम होगा which should be very specific. तो DNA जो है, because the nucleus is the brain of the cell, so जो DNA है it will order the amino acids और it will order through the, मैंने आप लोगों को बताया था मैसेंजर RNAs and ट्रांसफर RNAs, उनके थ्रू ये मैसेज देता है राइबोसोम्स को कि किस टाइप का एंजाइम चाहिए. सपोज अगर एग्जांपल दोबारा हम वही लेते हैं कि अगर किसी सेल के अंदर माल्टोज ज़्यादा हो गए हैं तो आपने उसको जो है अगर ब्रेक डाउन करना है तो फिर आपको क्या चाहिए, आपको उस टाइम पर राइबोसोम को DNA ये ऑर्डर देगा दैट यू हैव टू लिंक द अमाइनो एसिड्स इन सच अ नंबर एंड इन सच अ सीक्वेंस to synthesize a specific enzyme that is maltase. I hope you understand. Then is the intracellular and extracellular enzymes. The intracellular are those which are synthesized and retained in the cell for its self use. So for example, they are found in the cytoplasm, nucleus, mitochondria, chloroplast. As you know, all of them needs energy. So here are some of the examples. So
extracellular enzymes, they are synthesized in the cell but secreted from the cell to work externally. Okay, suppose the pancreas produce an enzyme, pancrease. That pancrease is not used by the pancreas, but it is transported to the duodenum, which is the part of small intestine. So now comes the active site and the substrate. There are basically two sites where the catalytic, there are basically a site where the catalytic activity carried out. Sorry. So basically, if you see here, जो मैंने भी आप लोगों को पहले भी एक दिखाई थी कि यहाँ पर कुछ साइट होती है where the substrate comes and attaches itself. Substrate क्या है? It is the reactant, or it is the material which the enzyme has to break down, or it has to make a complex from it. ठीक है, अब substrate में ऐसा भी हो सकता है कि एक माल्टोज आए और उसको जो है 2 ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, और ये ऐसा भी हो सकता है कि 2 ग्लूकोज आए और उनको माल्टोज में कन्वर्ट होना है. सो इट डिपेंड्स कि वो कौन सा, यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, तो इट डिपेंड्स कि ये कौन सा ऑर्गन है और इधर ब्रेक डाउन चाहिए या इधर फॉर्मिंग अप द कॉम्प्लेक्सेस वाला रिएक्शन चाहिए. सो द एक्टिव साइट, इधर जो है ये सबस्ट्रेट आके अटैच होता है. इट कैन बी एनी मटीरियल, इट कैन बी एनी प्रोटीन, इट कैन बी एनी ऑर्गेनिक मटीरियल. So the active site, this active site has basically two types. Number one is the binding site, and number second is the catalytic site. The binding site basically, it recognizes the substrate which the enzyme has to work on, and it binds it to the active site. It basically recognize the proper substrate to produce product. And the catalytic side is basically the active side which will do the activity which will transform the substrate to product, or which will perform the catalytic action of enzyme. You can see here the enzyme and substrate, they both join and form a enzyme substrate complex. Within seconds it produces this into the products. अब अगर आप यहाँ पे maltose की example लेते हैं, it's a maltose and then it is converted to 2 sugars, 2 glucose. Then comes the enzyme structure. So the enzyme has two parts. It has a proteinous part and it has a non-proteinous part. So enzyme, as I told you, it is a whole protein. It is a globular structure. That is the proteinous part. The other small part, which in some enzymes is a non-proteinous part. कुछ ऐसे enzymes हैं which don't need any non-proteinous part, but some of them have the non-proteinous part. So this non-proteinous part is divided into two, the organic and inorganic. अब यहाँ पर हम organic की बात कर रहे हैं, so there will be no proteins, यानी कि lipid हो सकता है, ये carbohydrate हो सकता है, ये nucleic acid हो सकता है, ये और कुछ भी हो सकता है, but it should not be protein, ठीक है, because it's a non-proteinous part. The non-proteinous part, the organic group, it has further two types. Number one is the prosthetic group and the other one is the coenzymes. So basically the prosthetic group is the non-proteinous part which is covalently bonded, that is, which is strongly bonded, and the one which is loosely bonded is called as this coenzyme. So it is loosely bonded. The other thing is the inorganic. The inorganic part is called as cofactor, which I will tell you here. So here is the cofactor. Cofactor is basically a bridge between the enzyme and a substrate, and it is very essential for the proper functioning of the enzyme.
So it is the bridge between the enzyme and substrate, and it basically contributes directly to the chemical reactions. अब इसका मतलब क्या है कि this part if it is present in an enzyme तो उस enzyme की functioning और ज़्यादा enhance हो जाती है और ये bridge बना देता है एक strong bridge between the enzyme and substrate और फिर जो कैटालिसिस का प्रोसेस है ये उसको स्टार्ट करता है और ये इंश्योर करता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो और कम यूज हो एंड इट हेल्प्स टू ड्राइव द रिएक्शन which will otherwise be difficult or will be impossible. Some of the enzymes use metal ions as cofactors. For example, मैंने आप लोगों को बताया था magnesium, iron, copper, zinc, etc. Either these cofactors are the inorganic part is loosely attached or it is that is it is detachable or it is strongly attached. So if it is loosely attached it is known as activator. So here it is written that it is a non-protein molecule which carry out chemical reactions that cannot be performed by standard 20 amino acids. So there are two types of cofactors, organic and inorganic. Here you can see it is an inactive protein, that is the cofactor attached. Without the cofactor attached, the protein is not active. Cofactor bind activator and the protein. You can see here binding site है ठीक है and it is the catalytic site और इधर ये जो है substrate attach हो जाता है. An enzyme with its cofactor removed is called as apoenzyme. I've told you this कि जिसका cofactor नहीं है that is यानी कि जिसका detachable है वो detach हो चुका है, that is called as apoenzyme. And the complete complex of a protein with all necessary small organic molecules, inorganic molecules, that is metal ions and other components, is known as holoenzyme. Types of organic cofactors. So organic cofactor. So the organic cofactors include prosthetic group and coenzyme. As you can see in the previous slide, wait a second, yes, as you can see here, I have told you that there is inorganic and organic part. Some of the scientists think that the cofactor is like it is inorganic, okay, and some think and there is organic and inorganic parts, they are different, okay. इसमें organic में आपके पास prosthetic group और coenzyme आ जाता है और inorganic में आपके पास cofactor आ जाता है. But some of the scientists think कि the non-proteinous part is wholly called as cofactor और इसकी जो है दो types आ जाती हैं आगे, that is organic and inorganic. So here I have told you both, ठीक है, आप लोगों को दोनों तरीकों से मैंने बता दिए. एक जो साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि नॉन प्रोटीनस पार्ट इज मेजरली डिवाइडेड इनटू टू एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक और उसको डिवाइड किया है, और दूसरा ये कि नॉन प्रोटीनस पार्ट इज कोफैक्टर और उसको जो है फिर इट हैज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर. सो आई विल रिकमेंड कि आप बल्कि आप इट्स अपॉन यू, आपको जैसे भी इजी लगता है इसको याद करना, यू कैन डू दैट. So here comes the types of organic cofactors. The prosthetic group. A prosthetic group is a tightly bounded organic factor. For example, there are some names. And the coenzyme is a loosely bounded organic cofactor. So then as the inorganic cofactors, they are the metal ions, okay. So here in the organic ones they are the organic molecules, like it can be glycogen, phosphorylase, etc. So here is the activation energy diagram. Here you can see यहाँ पर जो है you can see कि without enzyme the activation energy is so high, ठीक है, and with using enzyme it gets low. So आप ये देख सकते हैं कि इस
रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मली अगर नहीं है एक एंजाइम, सो देन उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए. सो बेसिकली उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि द एंजाइम वर्क बाय वीकनिंग बॉन्ड्स. ठीक है, द रिएक्टेंट हैज़ डिफरेंट बॉन्ड्स, उसके बॉन्ड्स को ये वीक कर देता है. सो दैट इज़ बेसिकली द लॉजिक. वो बॉन्ड्स को वीक कर देगा और उसके बाद जो है वो बॉन्ड्स वीक होकर बॉन्ड्स टूट जाते हैं. इस वजह से एनर्जी जो है वो कम से कम चाहिए होती है. सो देर आर टू प्रोसेसेस. एक तो आ जाता है एंजाइम्स फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस. पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ जो बॉन्ड ब्रेकेज की बात है. ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्सेस टू सिंपलर वंस. एज यू कैन सी दिस इज द एक्टिव साइट. ओके, सो एक्टिव साइट पर क्या हो रहा है? A proper kind of substrate which is suitable for this enzyme is getting attached. ये अटैच हो जाएगा. अब यहाँ पर जो इसका बॉन्ड था जहाँ पर इसको उसको ब्रेक डाउन करना है, तो एंजाइम ये करता है कि एंजाइम ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वो इसको यहाँ से ब्रेक डाउन कर देता है और इसको सिंपलर एंड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है. वाइल इन दी अदर रिएक्शंस जहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, तो वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि दो सिमिलर सब्सटेंसेस आकर अटैच हो गए. उसके बाद इनके दरमियान में वो पॉइंट जहाँ पर कि इनको अटैच करना था, उधर से ये एंजाइम हेल्प करता है इनको अटैच करने में और इनके बॉन्ड्स को फॉर्म करता है. So now comes the mechanism of enzyme action. The catalytic efficiency of enzyme is explained by two perspectives. Number one is the thermodynamic changes which the enzyme causes in in itself, in the chemical reactions and in the substrate. And second is the process at the active site. There are almost 4 processes which occurs at the active site, but I will not tell you that much. Just um, I will try to make it easier for you people. So first of all, thermodynamic changes overview. Without enzyme, as you can see, there are 2 lactose. Okay, so the activation energy which is used is very high और उसको फिर ग्लूकोज में ये कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई. दूसरा फिर इसमें पॉइंट आ जाता है विद एंजाइम. विद एंजाइम द वर्क इज बिकमिंग सो इजी फॉर दिस सेल. ओके, सो this is how the through the thermodynamics it changes. Then is the processes. The process is the covalent catalysis. Basically the enzyme form covalent linkages with the substrate, forming transient this complex enzyme substrate, and it lowers its energy. जैसे मैंने अभी आप लोगों से बात की थी कि वो बॉन्ड बना लेता है सबस्ट्रेट के साथ और उसके बॉन्ड्स को अगर ब्रेक डाउन करना होता है तो ब्रेक डाउन करने में इजीली हेल्प करता है और अगर उसको ज्वाइन करना होता है तो फिर ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट्स अ कॉम्प्लेक्स. ये जब अटैच हुआ तो फिर इसने उसको बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करके दो में कन्वर्ट कर दिया. सो मैकेनिज्म theories. ये मैंने आप लोगों को बताया था कि there are 2 theories. Earlier the theory was that it's a lock and key model. There is specific key for specific locks. इसी तरह से there is only one specific enzyme for each specific substrate. और उसमें ये भी बोला गया था कि जब एंजाइम एक सबस्ट्रेट को चेंज कर देता है तो उसके बाद वो दूसरे सबस्ट्रेट को चेंज नहीं कर सकता. बट उसके बाद और उसमें ये भी बताया गया कि द एक्टिव साइट इज़ वेरी रिजिड एंड इट इज़ नॉट मॉडिफाइड. बट द इंड्यूस्ड फिट मॉडल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जब इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस एंड थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स द साइंटिस्ट्स रिवील्ड दैट इट इज़ नॉट द केस. द एंजाइम द सबस्ट्रेट कैन इंड्यूस fit into the active site, and as the substrate attaches and it is converted to products, after that it can easily the active site changes itself and modifies itself more better. यानी कि उसमें और पॉजिटिव चेंजेस आ जाते हैं जो कि और अच्छे से किसी और अभी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे आप ये देख रहे हैं
ये इधर आकर जब एक अटैच हो गया, उसके बाद इसने दो को कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये अपनी शेप को थोड़ा चेंज कर लेता है। अब ये उसी तरह के और डिफरेंट भी टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट, दी सेम टाइप ऑफ सबस्ट्रेट को ये अटैच कर सकता है अपने साथ। Then comes the classification. This is important. There are basically 6 major classes, and they are classified on the basis of reactions these enzymes catalyze. So number one is the oxido reductase, which is the oxidation reduction reaction catalysis. Then is the transferase. In this, transfer the chemical materials. Then is the hydrolase. Hydrolase is the processes in the presence of water. And then is the lyase. Lyases are the breaking down and cleavaging. Cleavage means आप उसको दो में convert कर देते हो, आप उसको दरमियान में से cut कर देते हो. So जहाँ पे you will cut any bond or any material, that will be lyase. Then is isomerase. Isomerase is the isomerization of the molecules. And the last one here is ligase. Ligases are the synthesis of new covalent bonds between substrates. It is by using the ATP hydrolysis. So then is the factors which affect the enzyme reaction. So number one is the environmental conditions, which includes the temperature and pH. Second is the inorganic substances, that is the coenzymes and cofactors, and vitamins essential for the proper enzyme functioning. For example, iron is needed for the proper functioning of hemoglobin to take up the oxygen. Third one is enzyme concentration, and fourth one is substrate concentration. Let's discuss all of them one by one. So the effect of temperature. As you raise the temperature, the rate of enzyme catalysis reaction increases, because it increases the kinetic energy of the reaction. It provides the kinetic energy which is provided by the ATP, but to a limit. इस limit के बाद what will happen? The heat will denature the protein, as you can see here. इधर ये attach होता है, ठीक है. It was the original shape, but as you heat it up, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये प्रोटीन जो है ये डीनेचर हो जाता है, और अब ये इसके अंदर फिट नहीं हो सकता. तो इसकी वजह से एंजाइम जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करना तो है एक अलग बात है. वो मोस्टली एंजाइम्स जब वो डीनेचर हो जाते हैं, उनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, इट्स अ वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर, उसकी वजह से वो एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करना और उसको फिट ही नहीं कर सकता. So the optimum temperature is 35 to 45, but it is recommended that 35 is a good temperature, 25 to 35. The temperature of 25, as you can see, it is the ideal temperature. So however, sometimes heat energy can also increase kinetic energy to a point that exceeds the energy barriers, which result in the denaturing of enzymes. Then comes the pH. Each enzyme has a very narrow range of pH for its working. As you can see, it is almost a 1.5 range. यानी कि अगर 5.5 पे ये एक्ट करता है अच्छे से, या 6 पर अगर ये एक्ट करता है एनी एंजाइम बेटरली, तो वो उसे आप 0.5 डाउन या 0.5 अप कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो इट विल नॉट एक्ट प्रॉपरली. सो ईच एंजाइम नीड्स स्पेसिफिक वन. मैंने आप लोगों को बताया भी था पेप्सिनोजेन की और पेनक्रिएस की, मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स भी लिखवाई थी कि किसको कितना टेम्परेचर चाहिए. सो सम एंजाइम्स एक्ट इन ये जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया है कि पेप्सिन जो है इट एक्ट्स इन अ वेरी एसिडिक solution. Then is the trypsin, it acts in almost in the neutral pH. And then is the arginase, it acts in the alkaline solutions. So high or low pH values, then optimum value will cause ionization of enzymes, which results in denaturing of enzymes.
So here it is also written most enzymes exhibit optimal activity of pH value between 5 to 9. So then comes the enzyme concentration. As you increase the enzyme, it will increase the rate of reaction. But उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि उतना सबस्ट्रेट भी अवेलेबल हो. ये ना हो कि सबस्ट्रेट इतना ज़्यादा नहीं है एंड यू आर कीपिंग द एंजाइम इंक्रीज, तो उसकी वजह से क्या होता है, रिएक्शन उतना ही हो सकता है जितना सबस्ट्रेट अवेलेबल होगा. सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इट इज़ लीनियरली प्रोपोर्शनल, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि सबस्ट्रेट और बाकी कंडीशंस भी अवेलेबल हों. So greater the enzyme concentration, greater and faster will be the rate of reaction. Then comes the substrate concentration. Substrate concentration जो है वो if you keep on increasing the substrate concentration, तो जितने enzymes available हैं they all will take up the substrate substances. So वो substrate को catch up कर लेंगे और उसके बाद they will start to do the reaction. But उसके बाद क्या हो जाता है, a time will come when there will be no enzymes available for the for attaching the substrate. तो उसके बाद क्या हो जाएगा, the rate of reaction will become constant. Okay, because all the active sites are full and they have the maximum turnover. Turnover means मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि यानी कि कितना टाइम में वो कितना ज़्यादा एक एंजाइम जो है वो उनको सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है. सो सपोज ये जितने भी एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट थे, सपोज इधर 10 एंजाइम्स प्रेजेंट थे और यहाँ पर 100 सबस्ट्रेट प्रेजेंट थे, तो ईच ने 10 कर लिया, 10 एंजाइम्स को कर लिया, उसके बाद इनका टर्नओवर मैक्सिमम तक पहुंची. आफ्टर दैट दे कैन नॉट डू एनी मोर. So the rate of reaction will become constant. It will not increase further. Okay, so now comes the inhibition. Inhibition is basically a process which will inhibit the enzyme reaction or its performance. So inhibition is caused by different substances which are called as inhibitors. So the prevention of an enzyme process as a result of interaction of inhibitors, or it is called as the interference of any other foreign material. So inhibitors are any substances that can diminish the velocity of an enzyme catalysis reaction. They are called as inhibitors. As you can see, the substrate and the inhibitors, they are almost alike. ठीक है. So basically it's a human body. आपकी body के अंदर जो है एंजाइम्स भी प्रेजेंट हैं, सबस्ट्रेट्स भी प्रेजेंट हैं. एंजाइम को सबस्ट्रेट को वो करना है, अपने साथ अटैच करना है, उसके बाद उसमें उसको प्रोसेस करना है. बट ऑल्सो आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कोई ड्रग्स लेता है, या और कोई ऐसा फॉरेन कॉम्प्लेक्स मटेरियल आ सकता है whose shape is like the substrate, तो वो उस स्पेसिफिक एंजाइम पर जाके अटैच हो सकता है. एज दिस वो जाकर उस पर अटैच हो जाएगा और बजाय इस सबस्ट्रेट के वो उधर जाकर अटैच हो जाता है और अपनी जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन करता है, या फिर वो किसी और साइट पर जाके या किसी और तरीके से उस एंजाइम को अफेक्ट कर सकता है. So there are types of inhibition. Number one is the reversible. Second is the irreversible. So the reversible has other types: competitive, non-competitive, uncompetitive, and mixed. So number one is the reversible reaction. It is an inhibition of enzyme activity in which the inhibiting molecule entity can associate or dissociate from the protein's binding site. As the name indicates, it is a reversible reaction. यानी कि अगर ये चीज़ें जाके अटैच हो गई हैं या ये प्रोसेस हो जाता है तो फिर वो रिवर्स भी हो सकता है, ये रिमूव भी हो सकते हैं. So they associate and disassociate with the protein binding sites. So competitive inhibition and non-competitive inhibition, these two are important for you people. So the competitive are the chemicals that resemble an enzyme's normal substrate and compete with it for the active site. जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि शेप उसकी या उसका स्ट्रक्चर जो है दैट इज सेम, वो सबस्ट्रेट को छोड़ के द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैज मोर अफिनिटी विद फॉर द एंजाइम, और इसी वजह से बजाय सबस्ट्रेट के ये जाकर अटैच हो जाता है.
दूसरे इसमें आ जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव inhibitors that do not enter the active site but bind to another part of the enzyme, causing the enzyme to change its shape, which in turn alters the enzyme activity. As you can see, वो active site पर नहीं जा रहा, वो substrate के साथ competition नहीं कर रहा, लेकिन वो enzyme पर कहीं और जाकर attach हो जाता है और वो उधर जाकर उसकी activity को खराब कर देता है. अब यहाँ भी आप लोग देखेंगे उसी तरह से ये दो और भी टाइप्स हैं. इफ यू वांट टू लर्न तो आप लोग उसको रीड कर लो. ओके, सो एट द एंड the irreversible ones. This type of inhibition, the irreversible ones, they involve covalent attachment. जहाँ पर covalent bonds की बात आ जाती है वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि there is kind of a permanent thing, एक permanent strong bond बन जाता है of inhibitors to the enzyme. The catalytic activity is permanently lost and it can be restored by synthesizing molecules. Okay, so aspirin which targets and covalently modifies a key enzyme involved in inflammation of an irreversible reaction. Another type of drugs, they causes the irreversible reactions and antibiotics, etc. So at the end, I have given you some of the questions. So see, girls, if you can answer in the notes, I have written their answers, but इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसको खुद पहले रीड करें एंड उसके बाद जो है आप अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन करें एक एक क्वेश्चन को और उसके बाद फिर उसको टैली करें कि वाकई आप जो आंसर दे रहे हो इज़ इट ट्रू और इज़ इट नॉट. सो आई होप गर्ल्स कि आप लोगों को समझ में आया कि आज का टॉपिक क्या था और आप लोगों को अब ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा अच्छे से समझ इंशाल्लाह आ गया होगा. अभी भी किसी चीज़ पर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बताएं. आज का लेक्चर तो ये हो गया. थर्सडे वाला जो लेक्चर है तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को थर्सडे को या फिर ऐसा दे सकता है मैं आप लोगों को कल वो चीज़ बता दूं. अपने पास पॉइंट आउट करते जाइए चीज़ों को. कोई और चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो बेशक करें, नो प्रॉब्लम. और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ. वो वीडियो प्लीज़ देखिए. उसमें आप लोगों को और भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा कि बेसिकली एंजाइम वर्क किस तरीके से करता है. Enzymes are really important proteins that speed up the rates of reaction, such as in photosynthesis, respiration, and protein synthesis. Enzymes are known as biological catalysts because they lower the activation energy of the reaction, hence speeding it up. They are unchanged at the end of the reaction and can be reused. Enzymes can work in different ways. Some enzymes help to break down large molecules into smaller ones, others build up large molecules from small ones, and some enzymes help change one molecule into another. So how do enzymes work? Enzymes work in conjunction with substrates. The enzymes and substrates are always moving, and occasionally they collide at the right speed and orientation so that the substrate fits into the enzyme at the active site. Collision theory dictates that collision must occur with sufficient energy and in a specific orientation for a reaction to occur. Enzymes are specialized. Their active site matches the shape of a specific substrate that they can react with. The enzymes and the substrates fit together using a lock and key mechanism. Once the substrate is in the active site, the reaction takes place. The required product is produced, and the enzyme releases itself and carries on moving around. In this example, the enzyme is breaking down the substrate into two smaller products. It could be protease, which breaks down proteins into amino acids, or carbohydrase, which breaks down carbohydrates into glucose, or lipase, which breaks down fats into fatty acids and glycerols. Hydrogen peroxide is often formed as a result of the reactions in cells, and if it is left behind to build up, it is harmful. Luckily, we have catalase enzymes that are really fast. They break the hydrogen peroxide down into harmless water and oxygen. Enzymes can help build up molecules like this, but the process is still exactly the same. Whilst enzymes do fantastic things, they are sensitive. Each enzyme has optimum conditions under which it works best. Firstly, there needs to be enough substrate around. They need a high enough substrate concentration for the reaction that they catalyze. If there is too little substrate, then the rate of reaction is slowed. Sometimes, if there is too much product around,
then the reaction slows because the enzymes and substrates have less chance of bumping into each other. So, the product needs to be removed for a higher rate of reaction. Enzymes also have optimum pH and temperature conditions. Up to a point, an increase in temperature causes increased rates of reaction because there is more heat energy. More energy means more collisions. However, above a certain temperature, the rate drops off due to denaturation. We will look at the effect of pH and temperature on enzymes in our video Denaturation of Enzymes. The optimum pH and temperature conditions are specific to the condition in which they work in. An enzyme that works in the stomach, for example, would have a more acidic optimum pH. And of course, there need to be enough enzymes around for the rate of reaction to be optimized. So we know that enzymes and substrates fit together at the active site to form a lock and key mechanism. The enzyme then releases the product and can be used again. They are sensitive to temperature and pH, and there needs to be a sufficient enzyme and substrate concentration for reactions to occur. Enzymes not only control all kinds of reactions such as in photosynthesis, respiration, digestion and protein synthesis, but we also make use of them in day-to-day life. Protease and lipase enzymes are used in biological washing powders to remove proteins and fats from stains in our clothes. We also use enzymes in our food and drink industries. Pectinase is used to break down the cells in fruit when making juice so that more juice is released. So girls, at the end जो मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाहती, वैसे तो आप लोगों को वीडियो देख के काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि इट्स अ वेरी इजी थिंग, इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है और इसके 3-4 फंक्शंस हैं, टू चेंज, टू ब्रेक डाउन एंड टू बिल्ड अप थिंग्स, ठीक है। और सबस्ट्रेट पे उसके आगे आप लोगों को ये भी बताया गया कि कंडीशंस कौन कौन सी हैं, जो मैंने भी आप लोगों को बताया कि वो किस तरह से जो है वो एक्ट कर रही हैं। इसके एंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये भी बताया कि एंजाइम्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। जैसे उन्होंने डिटर्जेंट्स का बताया कि वो डिटर्जेंट्स में यूज़ हो रहे हैं टू रिमूव द स्टेन्स। नाउ देयर इज़ अनदर वीडियो जिसमें आप लोगों को एंड में इनहिबिशन का भी बताएंगे, सो प्लीज़ लिसन टू दिस वन ऑल्सो। Human body is a product of different chemical reactions and processes. But what controls these reactions? In 1833, a French chemist, Anselme PM, was the first to discover the vital force that drove these reactions and named it enzyme. Enzymes are substances, proteins, or in some cases, ribonucleic acid, RNA, that speed up a biochemical reaction by modifying specific substances called substrates. Enzymes are supremely selective in who they bind to and modify, hence their specificity. Mode of action. Easier said, but how does a tiny enzyme speed up a chemical reaction? The answer to this is simple. Enzymes perform this critical task by lowering a reaction's activation energy, that is, the amount of energy needed for the reaction to begin. Enzymes bind to their substrates, hold them in such that chemical bond breaking and bond forming processes take place more easily. Enzymes have a specific place in them called active site, where the substrate binds and real-time action takes place. Active site has a specific size, shape, and chemical behavior rendered to it by specific arrangement of amino acids. Thanks to these amino acids, an enzyme's active site is unique only to a particular substrate. In addition to the active site, many enzymes consist of a non-protein part called cofactor. Cofactors may be cations, positively charged metal ions, activators, bound temporarily to the active site to activate the enzyme, organic molecules, vitamins or vitamin products, coenzymes, that join enzyme substrate complex temporarily, prosthetic groups, permanently enzyme bound. Many enzymes only perform their catalytic role when associated a coenzyme. An inactivated enzyme, protein, along with its coenzyme, non-protein, makes up a system called holoenzyme. To add to the complexity, scientists termed this inactivated enzyme as apoenzyme. And therefore, the equation becomes holoenzyme equals apoenzyme plus coenzyme. Models of enzyme action. Lock and key hypothesis. This is the simplest model to represent how an enzyme works. The substrate simply fits into the active site to form a reaction intermediate. Just like the key fits in its specific lock, the shape isn't changed here,
Rather, the structure of the substrate absolutely complements the structure of the enzyme, like puzzle pieces. Induced fit hypothesis. In this model, the enzyme, upon binding of substrate, changes shape. The matching between an enzyme's active site and the substrate isn't just like two puzzle pieces fitting together. Rather, the enzyme changes shape and binds to its substrate even more tightly. This fine-tuning of the enzyme to fit the substrate is called induced fit. Environmental effects on enzyme function. Active sites are very sensitive. They sense even the slightest change in the environment and respond accordingly. Some of the factors that affect the active site and consequently enzyme function include temperature. The suitable temperature for enzymes to function properly is 37 degrees Celsius. Increasing or decreasing the temperature above 37 degrees Celsius affect chemical bonds in the active site, making them less suited to bind substrates. Higher temperatures denature enzymes. pH. Amino acids present in the active site are acidic or basic. Fluctuation in pH can affect these amino acids, making it hard for substrates to bind. Extreme pH values can denature enzymes. Enzyme concentration. Increasing enzyme concentration will increase the rate of reaction, as more enzymes will be available to bind with the substrates. However, after a certain concentration, any increase will have no effect on the rate of reaction. Substrate concentration. Increasing substrate concentration increases the rate of reaction. This is because more substrate molecules will be colliding with enzyme molecules, so more product will be formed. But again, this effect is valid up to a certain concentration. Inhibition of enzyme activity. Some evil substances called inhibitors reduce or even stop the activity of enzymes in biochemical reactions. They either block or distort the active site, thus inhibiting the reaction. Based on this, there are two types of inhibitors given below. Competitive inhibitors occupy the active site and prevent a substrate molecule from binding to the enzyme. Non-competitive inhibitors attach to parts of the enzyme other than the active site to distort the shape of an enzyme. सो गर्ल्स एट द एंड आप लोगों को इसमें मेरे ख्याल में ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव थी, इसमें बहुत अच्छे से बताया भी है, तो आप लोग इन वीडियोस को बेशक बार बार देखें, आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इसके अलावा फिर इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, और मैं आप लोगों के साथ जो इसकी जो पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग जितना भी देखेंगे, जितनी भी मॉडर्न आप लोग लिटरेचर को स्टडी करेंगे, उसमें जो कोफैक्टर वाला जो पॉइंट था उसमें यही दिखाया गया है कि कोफैक्टर जो है दैट इज इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, विच इज द इनऑर्गेनिक पार्ट इज द प्रोस्थेटिक एंड द दैट ग्रुप क्या नाम है इसका, को एंजाइम्स। ठीक है, सो अगर आप लोगों को वैसे इजी लगता है तो मैं आप लोगों के नोट्स में उसको उस तरह से चेंज कर देती हूँ। बट अगर आप लोग इसको कुछ ऐसे लिटरेचर में देखें, जैसे कि मैंने इसको कुछ बुक्स में देखा था, तो उसमें ये था कि दी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पार्ट्स दे आर डिफरेंट। सो इट्स अपॉन यू कि आप लोग इसको किस तरह से डिवाइड करना चाहते हैं। सो होप के गर्ल्स आप लोगों को सब कुछ समझ में आया हो, एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी हुई। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो सो डू टेल मी। Okay girls, stay safe and best of luck.